I'd like to वेलकम एवरीबॉडी, सारे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं विमेंस एक्शन फोरम की तरफ से खुशामदीद। हम लोग सब काफ़ी परेशान भी हैं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि जो मईशत का हाल है हमारे मुल्क में और उसका जो असर लोगों पे हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बजट आया है जिसको कि समझ में पूरी तौर पे नहीं आ रहा है। जो हम अखबारों में कमेंट्स पढ़ते हैं वो इतने कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म के कमेंट्स होते हैं कि समझ अपनी तरफ से कोई फैसला करना कि अब हमारे लिए क्या बेहतर है बहुत मुश्किल है, और इसके क्या असरात होंगे आम लोगों पे और मुख्तलिफ तबके के लोगों पे, उसके ऊपर भी हमें एक क्लैरिटी की सख्त ज़रूरत है। तो इसके लिए हमने सोचा कि हम कैसर बंगाली साहब को बुलाएं, क्योंकि उन्हीं के पास हम जाते हैं जहाँ पर हमें एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। हमें से बहुत जो है इस न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम से आजिज भी हैं, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि उसके जो एक वेब है उसमें से निकलने का क्या तरीका है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात बार बार होती है, ये भी नहीं मालूम कि क्या कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो कि किस सीक्वेंस में होने की ज़रूरत है। हम एज सिविल सोसाइटी, ख़ासतौर पे एज विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं कैसर, आई डोंट नो हाउ मेनी यू विल टेक एंड हाउ मेनी यू कांट, बट हमारी वी रियली नीड क्लैरिटी ऑन व्हाट इज हैपनिंग टू आवर कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग टू सोसाइटी एंड व्हाट डू वी नीड टू डू। पॉलिटिकल पार्टीज हमसे क्या कह रही हैं, ज़्यादा तो पोस्चरिंग लगती है और हालात ख़राब हुए जा रहे हैं। सो विद दैट वी आपको वी वेलकम यू। लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट। हमने 10 से 11 मिनट इंतजार कर लिया सबका, एंड आई एम श्योर पीपल विल कम, और फिर बातचीत होगी और सवाल जवाब होंगे, उसमें और भी क्लैरिटी हो जाएगी। सो विद दैट थैंक यू अगेन कैसर, यू आर ऑलवेज वेरी obliging and we are very thankful to you for that. So the floor is yours now. थैंक यू खबर और सबको अस्सलाम वालेकुम। I think most people I know have known for a long time. We work together on many things, and it's a pleasure to be here. Although I wish कि हम in person होते तो ज़्यादा और अच्छा होता, but this is as good as it can get. ये भी मेरी ख्वाहिश होती कि मैं अच्छी खबरें सुनाऊं, लेकिन जो हालात है वो इस वक्त नहीं कर सकता। इफेक्टिवली पाकिस्तान पिछले 2-3 साल से बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन ये है कि मैं अगर कर्जा लूं और वापस न कर सकूं तो मैं बैंकरप्ट हूं। और पाकिस्तान अब कर्जा लेता है सिर्फ कर्जा वापस करने के लिए। हम किसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर्जा नहीं लेते। सिचुएशन ये है, एक सवाल अभी जो बातें थोड़ी हो रही थी कि ये बताएं कैसे हम यहाँ आए, इस पर भी मैं बात करूँगा। आज दो वेरिएबल्स हैं जिससे मईशत की हेल्थ को देखा जाता है। एक बजट डेफिसिट है और दूसरा एक ट्रेड डेफिसिट है, इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट। बजट डेफिसिट का हमारा ये हाल है कि फॉर एवरी 100 रुपीज ऑफ रेवेन्यू our expenditure is 200 rupees, and for every $100 of exports our imports are $220. Now with this kind of deficit we spend double of what our revenue is, and we import more than double of what our export is. Once in a while, 1 year, 2 year, few years, this can manage, but consistently large deficits we have been managing through loans, and we have reached a point कि अब लोग लोन देने को भी तैयार नहीं है। हमेशा ये होता था कि जैसे नवाज शरीफ की इसकी इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई थी, ये IMF के पास गए थे, तो पहले सऊदी अरब और चाइना से कुछ पैसे ले लिए, बाद में IMF के पास गए ताकि बार्गेनिंग पावर अच्छी हो। इस दफा दोनों ने कहा कि पहले IMF से एग्रीमेंट करके आओ, बाद में देंगे।
जो एक बहुत तशवीशनाक बात है जो मीडिया में समहाउ हेडलाइंस नहीं बनी है, वो ये है कि जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो अब एलसी खोलने को तैयार नहीं है ऑयल इंपोर्ट के लिए। एलसी इज द लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज ओपन इफ यू वांट टू इंपोर्ट एनीथिंग। उसका तरीका ये होता है कि आपको $100 की कोई चीज़ मंगवानी है तो आप $10 बैंक में जमा करा दें, एलसी खोल लें, और बाकी $90 उस वक्त दें जब माल आपके पास आ जाए। So you don't have to have, so you can, if you have $100, you can open 10 LCs for $10 each. और जब माल आए जैसे आए आप पेमेंट करते रहें। अब एलसी नहीं खोलने का मतलब ये है कि दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान कि जो बकाया पैसे हैं $90 या $80 वो पाकिस्तान दे पाएगा। वो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट, एंड IMF डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान. We have all protested the imposition, the passage of the state bank law, जिसपे एक स्टेट IMF के एम्प्लॉई को लाके गवर्नर बनाया गया स्टेट बैंक का। लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है complete lack of confidence that IMF has in Pakistan to even implement the agreement that Pakistan makes. So they want their own person in the state bank and their own person in the finance ministry as finance minister to make sure that जो agreement पाकिस्तान करता है वो implement भी करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। ओवरनाइट नहीं आए हैं। The crisis has been in the making for the last 40 years and it particularly the last 20 years. मैंने एक स्टडी की है, I looked at all the economic data from 1990 to 2015, 25 years, and I find that crop agriculture growth rate is 1.7% average. If our population is 2.5%, and your crop agriculture, particularly wheat, is growing at less than 2%, then you know that there's going to be a crisis. एक टंकी में अगर 1 मिनट में 1 ड्रॉप पानी गिरता है और उसके टैप में से 2 ड्रॉप निकलता है तो वो टंकी तो खाली होनी है, and we are in this situation. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने अंडरमाइन किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया है। इन द लास्ट 40 इयर्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर न होने के बराबर रहा है। एज अ रिजल्ट हमारा जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लीट हो गया है। वी यूज्ड टू textile is our biggest industry and our biggest export, and we used to export raw cotton also. अब हम कॉटन अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ टेक्सटाइल रह गया है, उसमें भी 3 चीजें हम एक्सपोर्ट किया करते थे, टॉवल्स, बेडशीट्स एंड होजियरी. द होजियरी इंडस्ट्री हैज डाइड, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद टॉवल्स एंड बेडशीट्स. कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट नहीं करते. सो दिस इज द स्टेट which we are building up. साल 2000 में जो गवर्नमेंट थी, they opened up the economy to imports on a very wide scale. Everything could be imported, and we can see that. But so in what I want to say here is that this debate as to who is responsible, ये नवाज शरीफ वाले रिस्पॉन्सिबल है, इमरान खान वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, फौज है, सब रिस्पॉन्सिबल है. Everybody is responsible. I think we should not get into this debate of who was better and who was worse, who took more loans or less loans, who. So ये जो इंटर पार्टी डिबेट है, ये बिल्कुल हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए. Everybody is responsible, and the measures that this government has taken in this budget are not measures that are going to address this problem that we have. The only benefit of the doubt we can give them is that they're here only for a few weeks,
and they are saddled with a very serious problem. So they are trying to manage, but मुझे उनकी तरफ से कोई signals नहीं मिल रहे हैं कि ये जो underlying problem है उसको ये address करना चाहते हैं. Now, what is the underlying problem? I did say that budget deficit और trade deficit का gap जो है वो बहुत बड़ा है, और अब तक हमें चाइना, सऊदी अरब, IMF, ये बाकी लोग, they kept financing us, but it's reached a point where they are no longer willing to put in the money. बजट डेफिसिट को कम करने के दो तरीके हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ाए या एक्सपेंडिचर कम करें. चूंकि हमारा इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर इरोड हो गया है ओवर लास्ट 40 years ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपकीप, और इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो हम सब रोजाना के बुनियाद पे फेस करते हैं वो पावर इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस जो है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि जब आप वक्त पे पावर जनरेशन कैपेसिटी नहीं बनाएंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी नहीं बनाएंगे. जो लास्ट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी बनाई, तो उस पर भी एक कमेंट करूंगा मैं. लेकिन उस वक्त भी हम कहते थे कि जी आप जनरेट करके क्या करेंगे, पावर डब्बों में सप्लाई नहीं होता, वेयर इज द ट्रांसमिशन कैपेसिटी, वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने. एंड वी हैव सरप्लस जनरेशन कैपेसिटी टुडे, बट पावर आउटेजेस फिर भी है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सफ़र कर रही है. लोग घरों में तो सफ़र कर ही रहे, लेकिन इंडस्ट्री जब सफ़र करते हैं तो इकोनॉमी बैठ जाती है, एक्सपोर्ट नहीं होता है, जॉब्स खत्म हो जाते हैं. So if in order to reduce our budget deficit, the revenue option is not an option in the short run. Short run में हम अपनी इकोनॉमी को वाइब्रेंट नहीं कर सकते. प्रोडक्टिव साइड ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन, the only option that is left is non-development expenditure. Or non-development expenditure just doesn't seem to stop. The whole stress of the government for the last 20 years is on revenue generation. Taxes मजीद collect करो. IMF भी इसी के पीछे पड़ी है. बाकी जो अगर आप किसी डिप्लोमेटिक पार्टी में किसी से बात करें, एम्बेसडर्स वगैरह जो हैं, वो भी यही कहते हैं कि योर टैक्स GDP रेशियो इज सो लो. बट माय कंटेंशन इज दैट लो रेवेन्यू is a problem, but not the main problem. And I say this for two reasons. एक direct tax होता है, income tax वगैरह, the rich pay that, and there is indirect tax, excise duty है, sales tax है, custom duty है. ये खाइंदा तो वधी खाई, पर ये इज्जत सां कोन खाइंदा आहियूं. रखे प्लेटुन में बस फ्रिज मां थोड़ो हथ में खायो, वरी खाधो वरी. Sorry, please mute yourself, Amar. You're unmuted. और बहुत शोर आ रहा है. Please put everybody on mute. Thanks. Kaiser, you are also muted now. Thank you. Everybody says the rich in this country don't pay taxes, which can be true. We do see a lot of wealth around in terms of housing and vehicles and other lifestyles. But I have checked the numbers. The problem is that the numbers of rich in Pakistan, तादाद जो है अमीर लोगों की, वो बहुत कम है. हमें दौलत नजर आती है, क्योंकि जो कम थोड़ी बहुत दौलत है वो दिखावा करते हैं. हमारे कल्चर में दिखावा करने का एक है. तो ऐसा लगता है कि अमीर तो दौलत तो बहुत है, लेकिन हुकूमत उसे टैक्स नहीं ले पाती है. If we put all the rich people on the tax net and collect all the tax that we have to collect, even then the total amount of tax revenue will not be very large. It should be large enough to cover your tax deficit.
and it won't be. इसी तरह जो indirect taxes हैं उसकी capacity बढ़ाने की नहीं है, इसलिए कि business economy weak है. I personally know of businesses that have shut down because they can no longer meet the cost of taxation and the cost of interest rates. कारखाने बंद हो गए क्योंकि अब वो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा और बाकी दूसरे कॉस्ट ज़्यादा है. They have to provide for their own electricity now and their own security and everything. So the point is that पूरा इस वक्त भी IMF का जोर है और हर फाइनेंस मिनिस्टर आगे कहता है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है हमें. जितना आप टैक्स रेवेन्यू स्क्वीज करेंगे इकोनॉमी से उतनी इकोनॉमी डिक्लाइन करती चली जाएगी, इसलिए कि the productive side of the economy does not have the capacity to pay more taxes. So I think we should get out of this fetish of collecting more taxes and concentrate on expenditure, non-development expenditure. जब इन्होंने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है, फॉर एवरी 10% अगर टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 11% बढ़ जाता है. So all the effort in raising taxes goes waste because it goes into the bin which is non-productive. 18th Amendment के बाद ये expected था कि तकरीबन 17 to 18 ministries जो है abolish हो जाएगी, उसके पैसे बचेंगे. वो नहीं हुआ और उसके सिर्फ नाम बदल दिए गए. पर चले वो कर भी ले, एक सब्सटैंशियल रिडक्शन होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर हम ये 15 से 17 मिनिस्ट्रीज को एबॉलिश कर दें. बट द रियल एलिफेंट इन द रूम इज डिफेंस. देयर वाज अ कमेंट अर्लियर कि डिफेंस एक और चीज है. डिफेंस और चीज नहीं है. एवरीथिंग नाउ इज बॉइलिंग डाउन टू डिफेंस. Until and unless defense expenditure is cut, the economy will not stabilize. And I think what I am talking about, because when you talk of defense expenditure, you are immediately given this, that the security situation does not allow us to reduce defense expenditure. I don't buy that, but I don't want to make that a debate. At least I don't want to enter that debate. There is a huge non-combat defense expenditure. Defense expenditure that has nothing to do with fighting a war. And I want to give two examples. Lahore se Peshawar GT road se jaएं, on average, every 40 kilometers, there is a cantonment. In fact, around between Gujranwala and Attak, there are 3 cantonments at 10-kilometer distance from each other. Now, these cantonments were built by the British in the 19th century, जब को रशिया में जार होते थे और एक खतरा था कि वो इन्वेट करेगा, तो उन्होंने ये cantonment बनाए थे. अब तो मॉस्को तक friendly states हैं. I think barring 2 or 3, all these cantonments have to be shut down. The other example I want to give is that every country has a coast guard, which looks after the coast during peacetime. But Pakistan has 2 agencies doing the same job. There is a Coast Guard and there is a Maritime Security Agency. We don't need 2. One of them has to shut down. Even India has only Coast Guard. Ye humne, and as you go along, you come across so many expenditures that has nothing to do with defense of the country, the real defense of the country. So I think we have to start talking and identifying those items that are not really defense related for the country, and this, I call it non-combat defense expenditure. We need a reduction of 1 trillion rupees in non-development expenditure, and defense is part of non-development expenditure. 1 trillion rupees कम करेंगे तो stability आएगी. Otherwise नहीं आएगी. They keep talking of stabilization versus growth, but in their view, stabilization only means more revenue to bridge the deficit. But revenue will not bridge the deficit. It will sink the economy even further. So we have to start talking of reduction of non-development expenditure.
On the trade deficit side, as I said, we are for every $100 of exports, import is $220. अच्छा, जो बजट डेफिसिट है वो तो चलो हम नोट छाप के कवर कर लेंगे, उसका बहुत हाई इन्फ्लेशन होगा, but we can't print dollars. For dollars, we are dependent on loans from others, and others are no longer obliging us. There are three. Export बढ़ सकती है deficit कम करने के लिए या import कम करें. Again, for the reason that the economy is so weak, we are only exporting bed sheets and towels. We have nothing else to. हम बनाएंगे तो बेचेंगे, हम कोई चीज नहीं बनाते. हम अपने आसपास देखें, हमारे घर में जितने गैजेट्स हैं सारे इंपोर्टेड हैं. जो दफ्तर में जो भी चीजें हैं इंपोर्टेड है. इवन ये जो स्टेपलर होता है वो भी इंपोर्टेड है, उसकी पिन भी इंपोर्टेड है. हम कुछ भी नहीं बनाते. You know, we have become a completely primitive economy as far as manufacturing is concerned. We import everything. There are three heads जिसमें बहुत ज़्यादा डॉलर रिक्वायरमेंट है. सबसे बड़ा तो ऑयल इंपोर्ट है. About 25% of our dollar bill is oil import. Why do we import so much oil? For two reasons. One is production of electricity and transport. Over the last 30 years, we began to shift our major electricity production through furnace oil, or furnace oil 100% imported. That made our electricity completely import dependent. जो हाइडल पावर है वो 4 से 5 महीने जनरेट नहीं होता, बिकॉज विंटर मंथ्स में पानी नहीं होता. सो यू हैव नो चॉइस बट टू गो थर्मल, और थर्मल हमने सारा फर्नेस ऑयल पे रखा. देयर हैज बीन अ पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू डेवलपिंग थर्ड कोल since 1988. In fact, one of the reasons Benazir's government was booted out was because she had signed a very large contract with a Hong Kong-based Chinese firm to develop third coal and generate power. That was scuttled. Finally, very reluctantly, grudgingly, थोड़ा बहुत third coal को ये promote कर रहे हैं. लेकिन मजे की बात ये कि जो PMLN की हुकूमत थी 2014 to 2018, they set up 3 coal-fired power plants in Punjab, all of them on imported coal. और ये उस वक्त भी हम कहते थे हमें समझ नहीं आता, आपका अपना कोयला रखा हुआ है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंपोर्टेड कोल लाएंगे. और वो इंपोर्टेड कोल भी कराची पे ऑफलोड करके पंजाब ले जाके प्रोड्यूस करेंगे. अगर आपने इंपोर्टेड कोल पे लगाना है पावर प्लांट तो कराची में लगाएं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग कोल up north is far more than the cost of sending electricity via transmission lines. Simple economics थी जो इन्होंने वायलेट किया. तो ये तो एक तो ये करना है कि हमें जो हाइडल के अलावा हाइडल की कैपेसिटी भी हम नहीं डेवलप कर सकते. Water availability in the dams is now very volatile because of climate change. We cannot know कि किस साल हम हाइडल से कितना पावर जनरेट कर पाएंगे. We have to have alternative sources. One guaranteed source, of course, is coal that we have, and we have enough coal to produce power for the entire country. जितनी भी चाहिए, बहुत कैपेसिटी है. और ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है कि कोल अच्छा नहीं है, ये भी गलत है. Our coal is as good as the coal in Germany. All these tests have been made, and a German firm has made this test. And I because I was in government in Sindh as advisor to Chief Minister, I've seen all these reports. I've sat on the meetings. I can tell you that third coal is as good as the coal in Germany or India or anywhere else. जहाँ पर तकरीबन 40% power coal से produce करते हैं. Then we have to go very, very strong on solar. I think solar technology has developed to a point where
off-grid solar. Every house, every factory, every office should have their own solar panels, and so that the pressure on the national grid is reduced. This is now economically feasible. It can be done. And I think one good thing the government has done is to remove all import duties on solar panels. But I think the effort must be to set up industries for us to manufacture our own solar panels. Because again, इनका जो mindset ये है कि जो चीज चाहिए import कर लो, import duty हटा दो, import तो कर लेंगे, डॉलर किधर है? तो ये जो mindset है कि जहां कोई shortage है, import कर लो, but we don't have dollars, so we can't even import solar panels. We have to go into the process of manufacturing our own solar panels, and this is no longer a very high-tech industry. We can do it. The other oil guzzler is transport. Mid-70s, we began to undermine railways and develop the road network, and NLC was set up. रेलवे का सारा कार्गो जो बिजनेस था वो रोड ट्रांसपोर्ट ने ले लिया, जिसमें एक किस्म की मोनोपोली है एनएलसी. Now, rail transport is 1/3 cheaper than road transport in terms of fuel use. So if a truck uses 100 liters of diesel from point A to point B, rail will use about 670 liters. So what we need to do now is to go back to the rail. We ideally abolish NLC and give the cargo traffic back to rail. Rail में उसके infrastructure में invest करना पड़ेगा, track में और दूसरी चीजों में. And now it is very easy to say abolish NLC, but it can't be done. We know it cannot be done. So to be realistic, I think what we should do is hold and create a holding company that owns railway and NLC both, and create an integrated transport where you run container trains from Karachi to North and vice versa, so that these containers, you put goods on the container, so long distance you transport by train, and then these containers are put on trucks, and then they make short distance trips to deliver factory to factory, house to house, whatever it can be done. This way we can reduce our oil imports by about 15%. So when you reduce your oil imports on energy generation and you reduce your oil imports on transport, that reduces your need for dollars, and that reduces your trade deficit. The other drain, which is a small, relatively smaller drain, is consumer goods. Go to a supermarket now and ढूंढने पड़ते हैं पाकिस्तानी चीजें. You even get dog food and cat food. If in this audience there are people with pets, my apologies to them, but I am all for banning these items. In Karachi, there is a cigar bar on Zamzama where it's very, very plush environment. You can sit there and smoke a cigar, and Havana cigars are available at 6,000 rupees. 6,000 rupees was 2 years ago. With all this devaluation, I'm quite sure 10,000 se upar ho gaya per cigar. All construction material is now imported. There are imported tiles and bathroom fittings and kitchen fittings, furnishing, curtains, sofa material, it's all imported. All this has to be banned. If just banning these items can reduce your import bill by 5%, that will be a huge impact on this daily drip devaluation of the rupee that is taking place. We already crossed 205 today, and we will keep crossing this every day, every other day, until and unless we cannot put a brake on our trade deficit that is expanding
without limit. This is the macro economy, that budget deficit and the trade deficit, what cannot be done and what can be done. We cannot raise our revenues in the short run. We cannot increase our exports in the short run. We need to reduce non-development expenditure, which includes defense, and we need to reduce our imports. Now, one other area that I want to highlight is a massive food shortage that is coming up, and it can come in the next few weeks. We produce wheat, but we are always short of 2 to 3 million tons, which we have to import. And we don't have the dollars for that. We import about 90% of our pulses, dal. We import about almost 100% of our palm oil for cooking oil. इसकी डॉलर डिपेंडेंसी है और डॉलर है नहीं जो हम इंपोर्ट करते हैं. इवन जब मैं ये जो कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहा था, डॉग फूड, कैट फूड, स्विस चीज एंड स्विस चॉकलेट, ये सब हम कर्जों के पैसों से इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने पैसे नहीं है. और ये कब तक चलता रहेगा कि दूसरों के पैसों पे हम अच्छी लाइफस्टाइल अपनी गुजारें. लेकिन लाइफस्टाइल तो छोड़ें, जो दाल रोटी जो है, दाल रोटी भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये भी हम इंपोर्ट करते हैं और ये हम खुद ग्रो कर सकते हैं. We have to have a policy where there is a minimum acreage of wheat, minimum acreage devoted to pulses, and minimum acreage devoted to sunflower and other oil seeds. By law ये होना चाहिए कि there are designated areas, districts, तहसील्स जहां सिर्फ या तो wheat grow होगा या दालें grow होगी या sunflower grow होगा, so that we are self-sufficient in these three things. Otherwise, we are going to face a situation where पैसे तो होंगे हमारे जेब में लेकिन ये चीज दुकानों में मिलेगी नहीं, quantitative shortage होगा. So this is the situation we are facing. I will stop here and I think it's best to take questions so that we can. I want to end on a very dire note. We are facing a massive economic collapse. Sri Lanka तो बहुत न्यूज में है लेकिन लेबनान न्यूज में नहीं है. Lebanon collapsed much before Sri Lanka, or we are number 3 on that list of collapsed economies. But we can do it if we can cut our non-development expenditure by $1 trillion rupees, if we can cut out all unnecessary imports, we can stabilize the economy and do it, because Pakistan is a resource-rich economy. We are not a resource-poor economy. It's just we have not managed it well. Thank you. I'll stop here, however, we'll take questions. There are a couple of questions within the chat box. I think let's take those and then we can ask them more. Yeah. One is a question about, Azhar has asked, how will the state deal with international agreements under WTO and other bilateral agreements? Because opening of imports and trade for imports is one of the WTO requirements or agreements, isn't it? It is a requirement, but WTO actually has a lot of provisions for poor countries, countries in crisis. There are a lot of things you can do. And if you declare an economic emergency, तो आपके पास बहुत space आ जाता है बहुत सारी चीजें करने का. And we need this economic emergency for 3 years. But अगर economic emergency declare करें तो फिर वो जो required steps हैं वो हम लें. ये ना हो कि जी economic emergency declare कर दी, वो steps भी नहीं लिए, पैसे ले लिए IMF से और 3 साल के बाद फिर वहीं खड़े हैं जहाँ आज खड़े, which we have been doing for the last 40 years. We take the money from IMF, एक ट्रांच लेते हैं, बाद में हम उनके जो टर्म्स है वो नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद IMF का एग्रीमेंट collapse हो जाता है. But we shouldn't do this again. Another question,
is to do with technology. Where do we stand vis-a-vis development of technology and its applications, and what do we do? I mean, I think you've talked about the solar panels and the need to produce them ourselves, but what about other technological, applications, or where we stand as a country in that? I don't think we are certainly far behind on technology, पर इतना भी बुरा हाल नहीं है कि हम अपनी बेसिक चीजें भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. कंज्यूमर गुड्स तो हम डेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें तो कोई कबात नहीं है. I don't see technology as a barrier at this point of time. If we want to, when we reach a point where we are competing with Germany and USA and on technology, then of course that issue can arise. But there is a very large Pakistani diaspora abroad in very, very high-tech fields. If living conditions here improve, there will be Pakistanis who will come back and work. I know for a fact that India mein hua hai ye, that a very large number of Indians have actually come back. In fact, they have built a city outside Bombay, jahan basically unke non-resident Indians को उन्होंने दिया है. वो पूरा शहर ही non-resident Indians का है, वहाँ रहते हैं ये लोग. And all kinds of facilities have been given to them to come. And there is no problem about that. Or अगर आपके पास डॉलर्स हैं, अपने डॉलर्स हैं, you can always bring in a non-Pakistani expert to come and work here. After all, पूरा Middle East जो है वो सारे गोरे एक्सपर्ट्स चला रहे हैं हर चीज. किसी को आप अच्छी तनख्वाह दे तो यहाँ आके करेंगे वो. Technology is not a problem. But ये दूसरा सवाल ये है कि the ease of doing business, लोग अगर आके करना भी चाहते हैं तो we know that they have go through so many hurdles and obstacles. So how do we give incentives? एक तो local businesses को incentives की जरूरत है कि नहीं, एक तो ये सवाल है. और दूसरा ये कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर आके कोई चीज सेटअप करने की. ये अभी तो हम बाहर के लोगों को भूल जाए, जो अपने लोग हैं उनको काम करने का मौका दें. और हमें इंसेंटिव कोई देने की जरूरत नहीं है. आप टैक्स रेट कम कर दें, इंटरेस्ट रेट कम कर दें, और जो डिसइंसेंटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज वो खत्म कर दें, तो यहाँ के लोग काम. आफ्टर ऑल जो यहाँ बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव्स एंड ऑल द डिफिकल्टीज, दे आर स्टिल डूइंग इट एंड सर्वाइविंग. I can list 100 businessmen that I know. I belong to a business family जो यहाँ इन तमाम मसाइल के बावजूद भी बिजनेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और काम करते हैं. तो ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट है कि लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ टैक्स रेट कम कर दें. 17% GST is a killer. You have to bring it down. Ideally bring it down to 5%. लेकिन GST started with 12.5% and they kept raising the rate because they wanted more and more revenues. So bring it down and bring down the interest rate. There is no business can function at 13, 14, 15% interest rate the state bank is imposing. So you do that and our businessmen will come forward. ये सारे academic debates हैं कि ये नहीं आएंगे और incentive चाहिए. कोई incentive नहीं चाहिए, बगैर incentive भी business करने को तैयार है. Okay. These were some of the questions that were in the chat box. I've now opened it to people. Yes, can you put up your hands and then we can take people with their questions. There's one where this is a question that we keep asking each other also, is where will the political will come from? ये तो governments in any country operate on the basis of demand. The demand that the people exert on their public representatives or on their dictatorship also. Even dictatorships have to take into account what public demand is. Some they can control with coercive actions, but everything they cannot. The problem with us is that, and I believe everyone in this hall, myself included, we are from the elite.
And we have been very content to let this economy drift the way it has drifted. हमारे रहने के इलाके अलग है, बहुत कंफर्टेबल है, अच्छे घर हैं, बड़े हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं. हमने पावर नहीं है तो जनरेटर लगा लिया, पानी नहीं है तो टैंकर से पानी आ जाता है. स्कूल्स खराब है तो एलीट स्कूल्स क्रिएट कर दिए, जहां एक बच्चे की फी जो है वो उसी स्कूल के चौकीदार की 3 गुना है. हॉस्पिटल्स हमने एलीट हॉस्पिटल्स बना लिए. वी हैव क्रिएटेड आवर ओन वर्ल्ड, एक अशराफिया का पाकिस्तान बना लिया. एंड द पीपल लिव वेरी मिजरेबल लाइव्स. They live in quarters. My research, the data that comes in on my research, there are families 20 to a room. बसों में लटक के छत के ऊपर बैठ के ट्रैवल करते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है. Because we have never demanded anything. There was a very interesting phenomena many years back. US consulate shift हुई कराची में, तो उनको एक जगह दी गई क्लिफ्टन में, जो ग्रामर स्कूल के एडजेसेंट थी, नेक्स्ट टू ग्रामर स्कूल. जो पेरेंट्स थे जिसके बच्चे ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे, दे प्रोटेस्टेड कि जी यहाँ एम्बेसी आएगी तो खतरा होगा, बिकॉज टेररिस्ट विल ट्राई टू अटैक एंड आवर चिल्ड्रन विल बी. सो देयर वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड ग्रामर स्कूल. Everybody arrived in their Mercedes and Pajeros and Land Cruisers, और वो सब गाड़ी में बैठे रहे एसी चला के कि जी जब टाइम होगा तो हम बाहर निकलेंगे, वरना बाहर बहुत गर्मी है. So this is our elite, and if this is how we have run our country. I'll give you 2 more examples. We all drink mineral water, or what is called mineral water, from bottles. सारी बाहर की कंपनीज हैं. There is Nestle and Coca-Cola and Pepsi, and they're on these factories. Now imagine this. हमारा पानी हमारे नलकों में बोतल में भर के हमें पिलाते हैं. Excuse me. We pay them in rupees. They convert those rupees into dollars and send it out as profit. They are making a profit because our state cannot give us drinking water. Look at education. We have run down our education so that even the middle class don't want their children to do matriculation. हम सब O levels, A levels करते हैं, and millions of dollars are sent to Cambridge University every year. And the elite is perfectly comfortable with this. चाहे वो elite फौज में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, पॉलिटिशियंस हो, प्रोफेशनल्स हो, लॉयर्स हो, मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट हो. we've never ever protested कि जी पानी हुकूमत क्यों नहीं देती हमें, रियासत क्यों नहीं देती लोगों को. पानी गैर मुल्की कंपनियां हमारा पानी बोतल में भर के हमें क्यों पिलाती है, क्यों A levels O levels करने पे हम मजबूर हैं. And so your question about where will the political will come from? The political will come from the elite when it becomes less selfish and demands from the government that you have to do this. You cannot create 2 Pakistans जहां एक हिस्सा शहर का महल नुमा घरों में रहता है और एक हिस्सा कच्ची आबादियों में रहता है जहां एक कमरे में 20 लोग भी सोते हैं. We have to start protesting and demanding this. Okay, we've got 3 hands up, Raza, and then after that Nasreen and Abdul Khalik. So Raza, you can go now. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. Just quick a comment, क्योंकि I work in the development sector and corporate sector also. I started my professional career from the corporate sector. और वहाँ पे जो एक चीज़ फील की मैंने जब I shifted to this development sector या working with the government, corporate sector में value for money है. वो 1 रुपया भी earn करते हैं, they feel and उनका होता है यार हमने earn किया. Other than अगर आप इस डेवलपमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पे वो हमें वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू ऑफ मनी की इंपॉर्टेंस जो हम कहते हैं वो नज़र नहीं आती, जो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में नज़र आती है. और जब मैं इस सेक्टर में आया था मैंने देखा था यहाँ पे बड़े बड़े लेविश हम इवेंट्स और देख रहे हैं, लेकिन
वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एक एक रुपया काउंट करते हैं। सो ये जो एक थिंकिंग आई फील, इसके ऊपर आप सर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो प्रोफेशनलिज्म अपने पूरे गवर्नमेंट फंक्शनरीज और जितने भी और बाकी से मुंसलिक लोग हैं। मेरा जस्ट क्वेश्चन आपसे है इसके कमेंट के अलावा अगर आप दे सके कि फोकस के हम जैसे अभी रिसेंटली देखते हैं क्लाइमेट का जो जितना भी इशू हो रहा है उसकी वजह से ज़ाहिर है हमारी डिफरेंट सिचुएशन चेंज हो रही है और क्लाइमेट इम्पैक्ट है हमारी पूरी इकोनॉमीज में, ग्लोबली भी ये पाकिस्तान वर्स उनमें आता है जो हिट होगा, वाटर शॉर्टेज और बहुत सारी। और अभी रिसेंटली हमने क्रॉप्स का भी देखा कि क्योंकि मैं खुद साउथ पंजाब से ताल्लुक है, सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है उस तरह से पानी नहीं था, फिर आंधियाँ आई और रिसेंटली वी हैव सीन कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट। सो हाउ यू सी कि क्लाइमेट। दूसरा मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वी सी कि चाइना हमारे बिल्कुल बराबर में है, हम उसे कहते हैं फ्रेंड कंट्री भी, वो डेवलप हो गई उसकी इकोनॉमी, उसकी स्मॉल स्केल बिजनेस डेवलप हो गए, लेकिन हम इतना क्लोज होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान क्यों उस तरह से नहीं डेवलप हो सका। हालांकि हम कहते हैं कि बिल्कुल एक क्लोज रिलेशन में, लेकिन उनकी एक छोटी खिलौने की भी इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई कि वो पूरी दुनिया में दे रही है और हम उनके बिल्कुल नेबर और एक बहुत क्लोज रिलेशन। तो ये क्या चीज है कि जिसकी वजह से, और प्लीज उस पर भी कमेंट किएगा, ये जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर। एक सवाल पूछे तो ठीक है, आपके 4 हो गए हैं सर प्लीज 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 आप प्लीज आई थिंक एवरीबडी शुड हैव अ चांस। सर प्लीज प्लीज रजा आपने काफी पूछ लिए, लेट्स मूव ऑन। क्योंकि वी कैन हैव अ सेकंड राउंड व्हेन वी इफ वी हैव मोर टाइम। कैसे वुड यू लाइक टू टेक द अदर टू? एक क्वेश्चन में यहाँ पढ़ भी रहा हूँ, वी हैड आवर ओन वाइब्रेंट इंडस्ट्री इन द 60s एंड 70s, व्हाट हैपेंड। मैं इस सवाल को जोड़ूंगा रजा के सवाल से। चाइना या कोई और मुल्क करीब है या दूर है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के करीब होंगे तो उनके उनके उनकी खुशबू या बदबू हमें लग जाएगी। बात यह है कि इंडिया ने भी बहुत तरक्की की है और हम इंडिया की हमारी न्यूज़ नहीं आती है, बट इंडिया की सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ हम शो करते हैं। इंडिया हैज़ मेड इनॉर्मस प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। एक पहले कच्ची आबादी में रहते थे, अब फ्लैट में रहने आ गए, दे परचेज द फ्लैट। ये वर्टिकल मोबिलिटी भी विजिबल है वहाँ पर, आप लोगों को मिलते हैं जो इस तरह से तरक्की हुई है। बात ये है कि अप टू द 1970s, up to 1977 to be specific, पाकिस्तान was a development state। जो रियासत थी उसका मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। इस दौरान मिलिट्री गवर्नमेंट भी आई, सिविलियन गवर्नमेंट भी आई, प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड गवर्नमेंट भी थी, सोशलिस्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट भी थी, but in all of these had one objective: economic development. So you had huge investment in physical infrastructure. We built dams, power stations, highways, ports, factories, फैक्ट्रीज में बड़ी फैक्ट्री, स्टील मिल, केमिकल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई जो नहीं थी हमारे पास, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, पोर्ट कासिम, इंडस हाईवे, तरबेला डैम, मंगला डैम, all this was done in 20 years, 60s and 70s. 77 the development state died and a security state was born. 77 के बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और इसकी एक स्टैटिस्टिकल मिसाल मैं ये दूं कि जो 70s में जो हमारा डेवलपमेंट बजट था, वो उसका जो ग्रोथ रेट था in real terms meaning inflation निकाल के, that was 21% per annum. Every year the development budget increased by 21% in real terms. In the 1980s this figure dropped to 2.7%, and we have never really recovered beyond 3.5% since then. So जो हमारे पैसे होते हैं रियासत के पास, वो सारे नॉन डेवलपमेंट हेड्स पे चले जाते हैं, डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं होते। जो हर बजट में एक डेवलपमेंट बजट अनाउंस करते हैं वो सिर्फ नोशनल होता है, चूंकि अलोंग द ईयर मंथ्स वो कट्स लगते चले जाते हैं और नथिंग रियली कम्स आउट। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एक वाइट एलिफेंट्स हुए हैं, मोटरवे बना दे,
इस तरह के which are of no use. So the state today, since 1977 till today, state का objective नहीं है economic development. State is running only on debt. और उनका सारा attitude ये है कि हम जो हमें चाहिए हम import कर लेंगे और import के लिए पैसे कर्जों से ले लेंगे. This is how the state has been running. And this is an explicit objective of the state. It is not implicit. It is not accidental. It is ये दानिस्ता है और ये बात मैं पूरी अपनी full responsibility के साथ कह रहा हूँ in my professional capacity. This is deliberate and this started from 1993. पहली दफा पाकिस्तान का स्टेट बैंक का गवर्नर एक IMF का एम्प्लॉई को ला के बिठाया गया, डॉक्टर मोहम्मद याकूब, और उसके बाद for 16 years uninterrupted, 16 years uninterrupted, State Bank has been headed by IMF, World Bank or Asian Bank people. We handed over our economy to the international financial community to run. And as long as they kept giving us money, we were very happy to run an economy, our lifestyle and everything else. We let our industry go to the ground. We have let our agriculture go to the ground. We've got Nasreen. Nasreen, I'll ask everybody to एक सवाल पूछे. So maybe Kaiser will take 2 questions first and then go on to the next 2. So Nasreen, आप पहले बोल लें और फिर अब्दुल खालिक बोल लेंगे. Then we'll have Nigat and Amar after that. Ji Nasreen, unmute yourself. I don't know what's gone wrong. No, you're fine. We can hear you. Okay. We can hear you. मैंने कह रहा हूँ कि जो बहुत ही मतलब कैसर का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें इतनी तफसील से बताया, मगर बहुत ही खौफनाक एक सिनारियो है. मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने कहा कि खाने पीने का चंद हफ्तों में इतनी मुश्किल होने लगी है, तो उसका क्या किया जाए फौरी तौर पे एज एन इमरजेंसी, ये मैं पूछना चाहती हूँ. That's a very valid question. In the medium term, तो मैंने कहा कि acreage आप define कर दें for these 3 things at least, and then we produce that. Even if it is more expensive than imported stuff, we must have a policy that these 3 basic things we will produce ourselves. We will not be dependent on imports, क्योंकि कभी डॉलर नहीं होते, कभी इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, जैसे आजकल वीट की प्राइस बढ़ गई है यूक्रेन की वजह से. We should not be subject to this international volatility. Short run between now and next year क्या करें और next 2 years क्या करें, we have no choice but to import. But I think dollars must be diverted from other sources and to import these 3. Make sure that there is no shortage in these 3 commodities. Importing Swiss cheese and Swiss chocolate and dog food and cat food and dog shampoo and cat shampoo. There must be a drastic reduction in import of all this. All construction material that is imported must be banned. All furnishing materials that is imported must be banned. And the dollars that is saved must be used to import the wheat gap, 2-3 million का जो gap है, और दालें import करें, और जो cooking oil के लिए raw material चाहिए वो import करें. For the next 2 years, I think we have to do this, but beyond that, we must create self-sufficiency in these 3 items and maybe other food items also that we can do. Thank you. It is doable. It is doable. Okay. जी अब्दुल खालिक, आप भी एक ही सवाल करें तो अच्छा होगा. It's your turn. आप म्यूटेड हैं, जरा अनम्यूट कर लें अपने आप को. Thank you, Khabar, and thank you, Kaiser, for presenting a very, very terrifying situation of Pakistan economy, which is in fact based on real facts. You have always been presenting this. So my only question is, what is wrong with this if Pakistan defaults? This is a very, very, a question whenever it arises,
people think that, oh no, it will be a blunder, it will do this and that. But I still remember an example of history when Argentina announced unilateral default in 2001. And after few years, the same Argentina actually come out of that default, and again, it is the member of G20 now. So my question to Kaiser Bengali, what is the wrong side, and how much horrible is it Pakistan defaults? Because the other situation around, social situation, economic situation, all the indicators are so clear about this default. So what is left? I get your question. Thank you. Let me share a joke which we used to go around when we 1998 जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस वक्त ये जोक ये है कि the government is worried about the sanctions that are to be imposed, और डॉलर भी उसी तरह महंगा हो रहा था, 35 रुपए से 55 रुपए हो गया विद इन अ मंथ। तो एक मिनिस्टर, कैबिनेट मीटिंग हुई, एक मिनिस्टर कहता है कि हम ऐसा, सब कहते हैं क्या करें अब, व्हाट इज द सोल्यूशन। एक कहता है कि अमेरिका पे अटैक कर देते हैं। पीपल से ये क्या ऐसा मजाक है? उसने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखिए अमेरिका पे अटैक करेंगे हम हार जाएंगे। देखिए जापान ने अमेरिका पे अटैक किया, वो हार गया, आज देखो जापान कहाँ खड़ा है। फिर अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा, हम भी वही खड़े होंगे। तो किसी ने, वो उस वक्त नहीं हुआ, बाद में किसी ने कहा कि जी हम जीत जाएंगे तो क्या होगा। तो ये वही हाल है। अर्जेंटीना जिस पेन से गुजरा है वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ बड़े बड़े हेडलाइन न्यूज आती है, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्व्ड इन अर्जेंटीना, यू नो। एंड जो जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, यहाँ आप, मेरी ऑडियंस में बहुत सारी खवातीन है, दिस इज WAF एंड यू represent women's interest, you know, thousands of women turn to prostitution to support their families. This has happened everywhere, जहाँ जहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो इमीडिएट तो ये होगा कि हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम तेल इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपके ट्रेन नहीं चलेंगे, जहाज़ नहीं चलेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेगी। अगेन एक बड़ा मज़ेख़ाइज़ सिचुएशन डेवलप हो सकता है यहाँ हमारे शहरों में, डिफेंस में, जहाँ हम सब अमीर लोग रहते हैं। हर घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लैंड क्रूजर्स एंड पजेरोज एंड मर्सिडीज, एंड ये सब अंदर पार्क्ड होगी और हर घर के आगे एक गधा गाड़ी खड़ी होगी, क्योंकि पेट्रोल तो होगा नहीं, हम सब गधा गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन इफ वी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इज नॉट समथिंग that we can take as a joke. Thank you. Nigar, Bunny, you wanted to say something? You had a question? You're also muted. I found this very, excellent in the sense of, understanding all the dimensions of the of macroeconomics, of the macroeconomic situation in Pakistan, whatever. But I'm just, we're living in a country with population, with our own needs of the people, which is food at one level, certainly that, and water, etc. But there are a whole range of other things that are what we consider non-development, which is education and health and climate change, etc. Those are intangible, but they are non-development, and yet they are cost. The budget is less for them, and it should be much more. So that is something that we should be increasing every year or every budget, etc. So I think we need to reflect this. First, करें हमें ये पैसे जैसे भी हम करें, whatever you're suggesting, सेव करते हैं या कुछ कमाते हैं वगैरह, तो हम दूसरा पाइप आगे ला लो, फिर भी हम उसको इस्तेमाल तो करेंगे। और अगर डिफेंस से भी सेव करें तो यहाँ लगाएंगे, लगाना चाहिए। लगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सही है। एजुकेशन और हेल्थ के बगैर तो कोई
न तरक्की हो सकती है, न एक सिविलाइज सोसाइटी हम बना सकते हैं अगर सही तालीम भी न दे लोगों को। लेकिन इस वक्त जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं वो तो बिल्कुल इट्स लाइक फूड ऑन द टेबल। देयर आर फैमिलीज, आई नो, यू मस्ट ऑल्सो नो, 1 लाख रुपया से ज़्यादा तनख्वाह थी, घर में छोटी सी गाड़ी भी थी, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, लेकिन अब नौकरी चली गई है तो घर में खाने को पैसे नहीं है। गाड़ी खड़ी है लेकिन खाने को पैसे नहीं है, और स्कूल भेजने के लिए अब किराए के पैसे नहीं है, तो बच्चे भी घर में बैठे हुए हैं। ये सिचुएशन मुल्क की भी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, while discussion of education and health and climate change and all this is very very important, हम सारी entire career इस पे हम बात करते रहे और demands करते रहे, but the situation today is food on the table. इस वक्त जो गरीब है, मैं ये इनको जो मजदूर काम करते हैं उसका खाने का ये है कि 15 रुपए की रोटी हो गई है और 60 से 70 रुपए का एक कप का चाय है। सो ये अगर उनके पास 100 रुपए होते हैं तो सिर्फ ये 2 रोटी और 1 कप चाय पीते हैं। दिस इज देयर एंटायर मील फॉर देम। इमेजिन अगर लॉन्ग टर्म रहा तो क्या न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट होगा। हम बच्चों की न्यूट्रिशन की तो बात करते हैं, अडल्ट न्यूट्रिशन भी एक इशू बन जाएगा पाकिस्तान में आने वाले दिनों में। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज मेक श्योर दैट एवरीबडी हैज फूड। कम से कम दाल रोटी तो मिले, वो उनको जो बेसिक चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो तो मिलता रहे ना। तो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आवर डिमांड्स should be to make sure that everybody has this basic food items available, and the macroeconomy has to be settled. And all the discussions that I go through in my own head with my colleagues, friends, family के अंदर, everything comes down to basically non-development expenditure. इंडस्ट्री को हमें प्रमोट करना है तो टैक्स रेट गिराना पड़ेगा, 17% से लोअर करना पड़ेगा। जब लो करेंगे तो रेवेन्यू हिट होगा। वो रेवेन्यू कहाँ से कवर होगा? नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से कवर होगा, डिफेंस से कवर होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, बल्कि आई वांट टू गो ऑन एंड से दैट आई थिंक वी शुड आल्सो ओपन अप द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉम्बैट डिफेंस। व्हाई डू वी नीड दिस बिग एन आर्मी? व्हाई डू वी हैव एनमिटी ऑल अराउंड अस? व्हाई डू वी हैव इंसर्जेंसीज इन फाटा एंड बलूचिस्तान? व्हाई कांट वी मेक अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद देम? मैं बलूचिस्तान में 3 साल मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी 1 साल में सेटल हो सकती है। ऑल दे वांट इज टू बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्रीटेड एज इक्वल्स, बट वी विल नॉट डू दैट। ये एवरी मंथ देयर इज ब्लड लेटिंग, सम सीरियस इंसिडेंट विच वी कॉल टेररिस्ट इंसिडेंट इन फाटा और इन बलूचिस्तान, जिसमें उनकी तरफ भी अमवात होती है, फौज की तरफ भी होती है। वी कांट गो ऑन। देयर इज समथिंग वी हैव टू थिंक, व्हाट आर द डिमांड्स? इन अनएंडिंग रिक्रूट्स ऑफ टेररिस्ट कैसे आ सकते हैं? ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द सोशियो पॉलिटिकल milieu in those areas. We have to settle that. We have to agree to that. हम वो नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी कोअर्सिव पावर इस्तेमाल करते हैं। PTM is the voice of FATA, but we want to undermine PTM. We will not let them speak. This, I think, we, the elite, have to question the state for the policies they are following. So I think I only talk of non-combat expenditure, but I want to say this, that combat expenditure is also questionable. Thank you. Thank you. Amar, you had your hand up. Do you want to ask something? And then we have a question in the chat box also we can take up later. Ji, Amar,
जी बहुत शुक्रिया। एक तो लाहौर वैफ का कि इतना अच्छी जो है प्रेजेंटेशन का उन्होंने मौका दिया सुनने का, और दूसरा कैसर बंगाली साहब को हमेशा सुना है और हर दफा जब भी सुना है तो एक नई इंसाइट मिली है। बावजूद इसके कि उनका पॉइंट वही रहा है कि नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर्स है, नॉन डेवलपमेंट जो बजट है उसको कम करना पड़ेगा। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा ये है कि खास तौर पर जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का जो एक भयानक किस्म का फ्यूचर हमें दिखाई देता है, और जो मेरी तरह गांव और मुख्तलिफ जगहों पर रिमोट एरियाज में जाते रहते होंगे तो वो समझ सकते हैं कि अब भी जो है न्यूट्रिशन की, एडल्ट न्यूट्रिशन चाहे जो है बच्चों की, उनकी सिचुएशन क्या है। हार्डली मैंने अभी जो है पिछले 1 साल के अंदर जो मैंने सफर किए हैं कश्मीर से लेकर थर तक, मैंने हार्डली जो है गांव के अंदर कोई मोटे या कुछ तंदुरुस्त आदमी देखे होंगे, तंदुरुस्त खवातीन देखी होंगी। अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इससे पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि हम दावा के साथ कहते थे कि शहरों में भूख तो हो सकती है लेकिन गांव के अंदर भूखा कोई नहीं मरेगा, बाकी उसको कोई और सेहत की, एजुकेशन की, बाकी कोई सहूलत हो या ना हो लेकिन वो भूखा नहीं मर सकता। लेकिन अब हम अपनी आंखों के सामने हम ये देखते हैं कि भूख किस तरह से लोगों को निगल रही है, और फूड सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझ रही हूँ कि ये पेट्रोल और बाकी चीजें, गाड़ियां नहीं चलेंगी, ये हमारा शहरों का इश्यू हो सकता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि खाना नहीं होगा और 2 रोटी में जब 10 लोग खाएंगे तो क्या सिचुएशन हो सकती है। अब भी कई घर ऐसे हैं, कई घर नहीं बल्कि उसकी तादाद रोज बरोज बढ़ रही है जो एक वक्त का खाना खाते हैं पूरे दिन के अंदर। दूसरी जानिब पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एग्रीकल्चरल जो इकोनॉमी जो थी वो कैसे डिक्लाइन हुई है कि अब गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है, दालें भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। मुझे याद है कि ये सिंध और उसका जो है फेडरेशन का ये झगड़ा तो रहता है कि सिंध जो है वो 2000 अपनी जो है ये जो सरकारी जो ये होता है रेट होता है इसका गंदम का 1 मन का वो तय करते हैं, और खान साहब उस वक्त 1500 पे आते हैं। लेकिन यह है कि वो गंदम हमारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उस वक्त हम अपने जो है उसको किसान को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वही गंदम हम फिर बाहर से मंगवाते हैं। तो इस किस्म का मैं चाहती हूँ कि इस पे भी कुछ एक इंसाइट हो जाए, क्योंकि आपने बाकी सारी चीजों पे जिक्र तो किया है, लेकिन ये इकोनॉमी खास तौर पर जो है फूड डिपेंडेंसी वाली जो बात अब हुई है उसको किस तरह से पाकिस्तान जो है नियर फ्यूचर के अंदर किस तरह से हम उसको फेस करेंगे, किस तरह से हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से भी जो चीजें आएंगी वो तो फिर डॉलर में ही आएंगी, फिर इंपोर्ट होगी। थोड़ा सा अगर आप इस पे अगर रोशनी डाले तो मैं आपकी मशहूर रहूंगी। लेट मी ऐड अनदर पॉइंट टू दिस सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी की बात और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात है। एक सवाल अजरा ने किया है चैट बॉक्स में कि विल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हेल्प गेट अस दैट फूड सिक्योरिटी एट द हाउस होल्ड लेवल। जी मैंने ऑलरेडी पहले तो बात मैंने की है फूड सिक्योरिटी की। जो अब तक फूड सिक्योरिटी की डिबेट हमारे यहाँ रही है वो अफोर्डेबिलिटी के हवाले से रही है। पीपल आर पुअर, कांट गेट फूड। अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो एक फिजिकल अवेलेबिलिटी है। लोगों के जेब में पैसे हैं, ढूंढ रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, ये सिचुएशन आएगी। सो इट्स अ न्यू डायमेंशन टू फूड सिक्योरिटी दैट वी आर नाउ फेसिंग। गांव में ये सही है, गांव में बहुत गुर्बत है, क्योंकि आप में से बहुत लोग एक्सपर्ट्स हैं इस सब्जेक्ट में कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। सिर्फ रोटी खा के आप अपने जिस्म को सेहतमंद नहीं बना सकते हैं, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जहाँ पर लोग रोटी मिल जाती है बाकी चीज़ें नहीं मिलती तो वो वैसे भी मेल नरिश्ड होते हैं। और हमने गांव में देखा है, ख़ास तौर पे थर पारकर में तो बहुत ही कॉमन है।
a very malnourished mother gives birth to a 1 kilogram baby, जिसके ज़ाहिर है सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते हैं, फिर पूरे मुल्क में हेडलाइन लगती है कि बच्चे थर में मर जाते हैं। तो ज़ाहिर है वो इसलिए नहीं मरते कि वो बच्चे को खाना नहीं मिला। बात यह है कि वो बच्चा तो 1 किलो का बच्चा पैदा होगा तो क्या उसकी सर्वाइवल चांसेस होंगे। So it's a much deeper long-term problem that we have to face. I also mentioned that we are been talking about child malnutrition, but we are going to increasingly face a situation of adult malnutrition also. अगर लोग सिर्फ रोटी और चाय पे गुजारा करेंगे तो उसकी सेहत क्या होगी 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। Land distribution certainly इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब, सिंध का रूरल एरियाज और बलूचिस्तान का नसीराबाद डिवीज़न जो है, ये बेसिकली लार्ज लैंड होल्डिंग्स का गढ़ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च, मेरी अपनी भी रिसर्च है कि जहाँ लैंड होल्डिंग्स बड़ी होती है वहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, वहाँ लड़कियों के एनरोलमेंट रेट्स भी कम है, वहाँ health indicators भी अच्छे नहीं है। All this is well documented, but there is another side to the land problem. There are parts of the country, especially in Khyber Pakhtunkhwa and Azad Kashmir, जहाँ land fragmentation is an issue. So land reform has to be addressed in a much more holistic way. जो साउथ पंजाब में एक फिनोमेना है वो feudalism is giving way to corporate farming. So I have a 3,000 acre farm, but I have 300 or 1,000 tenants, जिसको मैंने 2, 4, 5 एकड़ प्लॉट्स दिए हुए हैं और 50-50 हम डिवाइड करते हैं। ये जो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। साउथ पंजाब में शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इज डाइंग आउट। All the landlords are getting rid of their tenants and they are farming their entire land on corporate basis. There is a lot of people from the rural areas who have been pushed out of land, और वो हमें कराची में भी नजर आते हैं। There is a huge population influx into Karachi from South Punjab. So all these changes are taking place, and the state has to manage these changes. These changes take place in all eras. जितने भी historical eras बनते हैं, as time goes on, technology changes and the economy changes, and these changes also took place in Europe 500 years ago or 400 years ago. We are also going through those changes, but the state is not managing it. The rural elite in South Punjab is getting rid of these tenants who have nowhere else to go but go to the cities and go into the slums, and then just क्या कर सकते हैं, स्लम शहरों में जॉब्स नहीं है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई है, नई फैक्ट्रीज लग नहीं रही है, तो वो फिर सिर्फ रेडी लगाते हैं सड़क पे, इनफॉर्मल सेक्टर डेवलप करते हैं। एंड this is what we have done. I mean, it's all before us. I don't need to explain what has happened and what is happening. I think if we just go out of our own comfort zones, हम सब किसी वक्त ये तय करें कि आज हम जब काम को जाएंगे तो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, हम बस में बैठ के जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि अवाम के मसाइल क्या है, कैसे रहते हैं। Especially women, you know, we have never and I particularly want to point this out to Aurat Foundation and WAF and others, और ये मैंने in person आप लोगों के सामने भी ये बात की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड कभी पेश नहीं किया WAF ने और औरत फाउंडेशन ने और दूसरे ख़वातीन के जो इदारे हैं, क्योंकि और हमने भी नहीं किया, मर्दों ने भी नहीं किया। It's not just the women. Well, we can talk of macro economy, we can talk of budget deficit and trade deficit and numbers and GDP growth rates and etc. It's very comfortable for us to sit on our table with our computers and laptops and
generate these numbers and give all these fancy speeches that I'm also making one right now. But, we don't travel by buses, so we have never really raised the demand for public transport as a demand. And this disconnect between the elite and the people in Pakistan is very sharp. This disconnect, I don't think exists anywhere else. It certainly does not exist in India. And I think this disconnect is what we have to address at our own end. But right now, the demand, it's a survival question. If Pakistan is to survive, the state has to survive. Then two deficits have to be addressed in the way that I've said. And for the survival of the people at the individual level, at the family level, I think food availability has to be made, has to be guaranteed, and the state has to take steps to do it. And we have to demand that the state does it. Thank you. If anybody has another question, because our time will be ending in another 5 or 6 minutes. We gave ourselves about an hour and a half. तो कोई और अजरा अगर आपको पूछना है आप डायरेक्टली पूछ लीजिए. अजरा की क्वेश्चन है, since government providing allocation to women friendly public transport. Public transport is not a matter कि आप कुछ बसें चला दें मखसूस लोगों के लिए. Public transport is a whole system. There is a whole system of managing transport. उसकी जो parts की inventory होती है, उसके जो maintenance होते हैं बसों के, वो पूरा उसके पीछे एक पूरी science है. जिस तरह garbage disposal की science है. कराची में होता ये रहा है. I don't know about other cities. जो एक मेयर था यहाँ पर मुशर्रफ के ज़माने में, वो ट्रक लेके पहुँच जाता था, खुद खड़े रह के कचरे उठवाता था. But that is not the way to deal with garbage disposal. वो भी एक science है. Where will you go and dump the garbage? What will happen to that garbage? If it rots and stinks, और जो हवा चलेगी वो कौन से आबादी पे से वो stink गुजरेगा? So public transport and garbage disposal and these are all systemic issues. You can't just have a few buses for women and say कि ये औरतों का मसला हल हो गया. Public transport नहीं होगी तो किसी के लिए नहीं होगी, औरतों के लिए भी नहीं होगी. और ये garbage disposal का भी यही हाल है. So the state has to come, and there are certain basic facilities which the people need, which is housing, water supply, wastewater disposal, garbage disposal, public transport. These are absolutely essential things in modern life, and if the state can't provide it, the state effectively does not exist for us. Well, sad state of affairs, but if no burning question, Kaiser, I think we'll bring this to an end, close, क्योंकि अब हमें आपस में भी बैठ के देखना है कि हम अपने ये सारी चीज जो आप डिस्कशन हुआ है उसके बाद how do we move forward. अभी अमर ने तो बताया कि हैदराबाद में वो लोग क्या कर रहे हैं, but this has been extremely useful और आपने इतना simplify करके सारे जो issues हैं मैं एक बात करूं. जी बिल्कुल. पॉलिटिकल विल की बात है, एंड आई थिंक जैसे कैसर ने बहुत रेलेवेंटली कहा कि ये फिर जिम्मेदारी हम लोगों की है कि प्रेशर डालें. और इसमें ये जो गार्बेज और गार्बेज का खास तौर पर जिक्र कर रही हूँ कि सरकार तो एब्डिकेट कर रही है, जैसे तालीम से एब्डिकेट किया, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है. दे आर आउटसोर्सिंग गार्बेज, जहाँ के लेबर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ नहीं मिलता. दे डोंट गेट एनी benefits, any securities or anything, and they are underpaid. तो और गार्बेज वहीं का वहीं कोई जगह साफ हो जाती है. तो कहीं this trend towards privatization also has to be, I don't know, मुझे लगता है it should be checked, but I don't know if it's economically feasible now. Ji, that's a very good point you are raising. Thank you. स्टेट पहले तो न्यू लिबरल फिलॉसफी को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा. न्यू लिबरल फिलॉसफी सेज स्टेट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल, एवरीथिंग द मार्केट विल प्रोवाइड. बट द पॉइंट इज दैट द मार्केट रिस्पॉन्ड्स टू परचेजिंग पावर, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू नीड. अगर एक गांव में 100 लोग हैं और 5 बहुत अमीर है,
जो रोज़ाना मोवेंपिक आइसक्रीम खा सकते हैं तो वहाँ मोवेंपिक आइसक्रीम की फैक्ट्री तो लग जाएगी, लेकिन बाकी 90% बच्चे अगर बगैर जूते के हैं तो शू फैक्ट्री कोई नहीं लगेगी. So the state has a responsibility and we have to demand that the state fulfills the responsibility. और जो basic needs हैं, housing है, water supply है, garbage disposal है, public transport है, education है, health है, ये basic needs है, ये state की responsibility होनी चाहिए. There should be no shirking of state responsibility. The state can subcontract delivery to the private sector, but the responsibility has to be of the state. ये तो बहुत ज़रूरी है करना है. और तो ये बेसिकली तो, और जो बड़े इश्यूज प्राइवेटाइजेशन के हैं, जो डिबेट रहा है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और अंग्रेजी वाला है, हमें उसको और को अंग्रेजी वाले से रिप्लेस करके उर्दू का और लगाना पड़ेगा. The solution now is public-private partnership. The state and the private sector combined delivering services. And this in Sindh, at least, it is a very successful experiment. Sindh has built a 62-kilometer 4-lane international standard highway, which the private company owns for 30 years. And this highway has been built with zero state funds. And this is a model where a lot of infrastructure can be built in terms of public-private partnership for service to the people. जो हैदराबाद मीरपुर खास का रास्ता 1.5 घंटे का था, अब 40 मिनट का हो गया है. In fact, Mirpur Khas has become a suburb of Hyderabad in many ways. So, and there are in Karachi Civil Hospital, the catering of the patients was given out to a private company, और जो catering का budget था वो उनको दे दिया. उनको कहा जी आप इसी को चलाएं और अगर पैसे ऐड करने तो आप ऐड करें. सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट्स को बहुत अच्छा खाना मिलता है. So there are a lot of examples of public-private partnership, and I think we can improve the functioning of the facilities of the state by this. But the state has to take the initiative and do it. The state has to basically decide that development, public service is its responsibility. It's legal, constitutional, moral responsibility. ये जो मैं acreage की बात करता हूँ, minimum acreage to wheat and dal and this, basically this is anti-globalization. But then we also have to reject globalization. ये नहीं हो सकता. हम अपनी जो essential चीजें हम खुद ही grow करेंगे, ये market philosophy अब किताबों में ही रहने दें. These are fundamental decisions which the state has to make, and we the elite, I think everybody on this discussion that is here, all of us are influential in some ways. We know how to raise our voice, but we have to raise our voice now. Thank you. I think this is a good note to end with. और काफी कुछ सोचने का भी मौका है, और हमें तो अपने इंटरनली भी विमेंस एक्शन फोरम को और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको भी, कि हमें हाउ डू वी गो फॉरवर्ड ऑन दीज इश्यूज, और किस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेशर हो सकता है. एंड एज यू से देयर आर क्वाइट अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स विद इन दिस ऑडियंस. तो इसके साथ बहुत शुक्रिया कैसर. थैंक यू सो मच. Thank you for the opportunity. My apologies for not giving any good news, but for the first time in my life, I actually now, it's been happening to me. I wake up 3 o'clock, 4 o'clock in the morning with a sense of dread कि क्या होने वाला है. I think that's a common feature with a lot of us कि कुछ नहीं मालूम कि अगला क्या होगा. But thank you so much. I mean, we need to feel the dread also to be able to act. तो इसके साथ हम विमेंस एक्शन फोरम की तरफ से कैसर आपका शुक्रिया, और and we hope के whatever steps we take, we'll share with you also. So and whatever you think I can do, please call on me. We are all together in this. Thank you. We always do that. Thank you. शुक्रिया बहुत. Khuda Hafiz. Thank you everybody who came and joined. I'm sure it was a worthwhile discussion. Shukriya. Thank you everyone.